Hello students, in our last class we have studied what is noun and its three types: proper noun, common noun and collective noun. And today we will study abstract noun. What is abstract noun? Abstract nouns are names of things that we cannot touch or see but we can only think of. Abstract nouns are the name of those things that we can only think, कि उनके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं. कैन नॉट टच और सी. वी कैन नॉट टच द थिंग्स, वी कैन ओनली थिंक ऑफ. दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. Abstract nouns have no physical existence. Like this pen is a thing, it has a physical existence, so it is not a abstract noun. They express equality. They means abstract noun. Abstract nouns express a quality, state, feeling or action. Like this, in quality what we include: beauty, honesty. State, we can only feel the beauty, we can only think of the beauty, but we cannot touch or see the beauty. If we see a beautiful girl, we cannot touch her beauty. We can touch the girl, we cannot touch her beauty. State, youth, childhood. Feeling or action, like this joy, happiness. We cannot touch the joy, we cannot touch the happiness, but we can think of. Fight, when two persons are fighting, we can touch the both persons but we कैन नॉट टच द फाइट. हम उन पर्सनस को टच कर सकते हैं बट उनकी फाइट को टच नहीं कर सकते. सो फाइट इज़ अ आइडिया, फाइट इज़ अ थिंकिंग, एंड थिंकिंग इज इंक्लूड इन abstract noun. Next, the name of arts and sciences are also abstract nouns. Means जो हमारे subjects होते हैं उनके names भी किस में include होते हैं? abstract noun में. Like this English, we can touch English book, English notebook, but we cannot touch the English because English is a concept, English is a idea. मैथ्स, केमिस्ट्री, हम मैथ्स केमिस्ट्री की बुक को टच कर सकते हैं बट हम किसको टच नहीं कर सकते? मैथ्स और केमिस्ट्री को टच नहीं कर सकते. लाइक दिस अदर फिजिक्स एंड ग्रामर, ऑल दीज आर abstract noun. Let's see some example. She is known for her beauty. She is a girl, we can touch the girl, we can touch she, we can टच सी. हम उस लड़की को टच कर सकते हैं बट वी कैन नॉट टच हर ब्यूटी. ब्यूटी को टच नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज ब्यूटी इज अ थिंकिंग, ब्यूटी इज अ आइडिया, सो इट इज इंक्लूड एन abstract noun. And abstract nouns are formed फ्रॉम एडजेक्टिव. abstract noun एडजेक्टिव से बनाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड. इन योर लास्ट क्लास यू हैव रीड डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइब्स अ नाउन, कि एक नाउन की करेक्टरिस्टिक बताते हैं, एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. लाइक दिस ब्लैक काउ, द वर्ड ब्लैक इज एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब काउ, द नाउन. सो काइंड, kindness, kind is an adjective and kindness abstract noun. Honest, honesty. From verbs, abstract noun also formed from verbs: grow, growth, obey, obedience. Like this is a tree and it grow. We can टच द ट्री, वी कैन नॉट टच इट्स ग्रोथ. हम इसकी ग्रोथ को टच नहीं कर सकते, इस ट्री को टच करेंगे. देन ट्री इज ए कॉन्क्रीट नाउन.
मटीरियल नाउन मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, बट ग्रोथ इज एन आइडिया, वी कैन नॉट टच और सी द ग्रोथ but we can touch the tree, so growth is a abstract noun. From common noun we can make abstract noun from common noun also, like child, childhood, king, kingdom. And the another classification, this is the abstract noun, and the another classification of noun according to count, गिनती के according, there are two types of nouns according to count. Countable nouns that we can count. Countable nouns are the nouns that we can count, जिनको हम count कर सकते हैं, like this book, pen, pencil, chair, table, all these things are countable, that we can count these things. And next one, uncountable nouns. Uncountable nouns are the nouns which we cannot count, जिन things को हम count नहीं कर सकते, like this milk, sugar, we cannot count the milk, we can measure by it by liter, and we can count the liters, but we cannot count the milk. And next, sugar, we cannot count the sugar one by one, but we measure it in kg or gram, so it is uncountable noun. Countable nouns have plural forms, while uncountable nouns do not have plural forms, like this book, books, and pen, pens. Countable nouns have plural forms.